Cash Management Module 162 Financial Management, and this is the third part of our discussion on this topic. We have discussed that cash is extremely important to run and operate a business, and cash is collected from several sources and cash is paid to different groups of people, and we have discussed them in detail. We have talked about what are the purposes of holding cash and how and when the cash is required. Now, in this module, we'll talk about a very important tool of managing cash, and that is called a cash budget. But before we discuss what cash budget is and how it is prepared, let's first talk about the term budget itself. Budget is something which every person, I would say even a layman, would do budgeting in his or her daily life. यानी हमारे पास जो पैसा जो आमदनी होती है उसका हम एक हिसाब रखते हैं कि कितने पैसे हमें मिलेंगे और उन पैसों को हमें कहाँ खर्च करना है और हमारे पास कितने पैसे बच जाएंगे या कितने पैसों की कमी होगी. This planning is done by almost every family, every earning hand. And simply, this is what is a budget. So, if we are making a plan of managing cash in a way that we want to see that from where we'll be collecting cash in our business, what will be what we call the sources of cash, kahan se cash aayega, and where we'll invest that cash, where we will be requiring that cash for payment, and then we compare that what we had earlier, what we will have, and where we will be needing it, and at the end, whether we'll end up with a surplus or deficit. This is simply what a cash budget is. So, to make a cash budget, first we need to see what is the opening or starting balance. Suppose we want to make a cash budget for the year 2021 or any year, and in that year, the amount of cash at the beginning of that year is the opening balance. यानी ये cash इस वक्त हमारे पास मौजूद है. This can be a positive balance or a negative balance. यानी ये यूं भी हो सकता है कि स्टार्ट के ऊपर हमारे पास एक नेगेटिव बैलेंस है, एक ओवरड्राफ्ट है, एक अमाउंट है जो कि हमें पे करनी है और नेगेटिव अमाउंट मौजूद है. So whatever it is, but that is the opening balance. In this opening balance, we add the anticipated receipts, the receipts which we think will be there, यानी हमारी सेल्स के ज़रिए, हमारे रिसीवेबल्स के ज़रिए या और सोर्सेज से हमारे पास कितना कितना कैश आएगा. So this is the receipts of cash. And then from this sum of opening balance and receipts, we subtract the payments. यानी हमें कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी अमाउंट पे करनी है, तो इससे हमारे पास से कैश चला जाएगा. दिस विल बी एन आउटफ्लो ऑफ कैश. वी कॉल इट एन एप्लीकेशन ऑफ कैश, एंड एज अ रिजल्ट वी विल हैव अ क्लोजिंग बैलेंस. यानी ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस तक पहुंचने के लिए इन सिंपलेस्ट पॉसिबल वर्ड्स हमारे पास रिसीट्स हैं और पेमेंट्स हैं. रिसीट्स हमारे कैश को बढ़ा देती हैं और पेमेंट्स हमारे कैश के बैलेंस को कम कर देती हैं. And this closing balance that we'll have at the end of a certain period of time, let's say we are talking about 1 year, this balance may be a surplus or a deficit. Surplus का मतलब है कि हमारे पास कैश बच गया. हमने जितना कैश प्लान किया था उससे कैश हमारे पास ज़्यादा आ गया. और अगर डिफिसिट है तो इसका मतलब ये है कि कैश की शॉर्ट फॉल हो गई, जितना हमने कैश प्लान किया था उससे कम रह गया. बिकॉज इट इज़ अ बजट एंड दीज आर नॉट एक्चुअल फिगर्स, सो इन एडवांस वी वुड नो that whether at the end of a year or if we are making a monthly budget, let's say, then at the end of a certain month, what will be the balance of our cash. यानी एक महीने बाद क्या हम लेट्स से जनवरी के एंड पर हमारे पास कैश डिफिसिट हो जाएगा, शॉर्टफॉल हो जाएगी, या कैश सरप्लस हो जाएगा. और इसी तरह फरवरी, मार्च, अप्रैल में क्या सूरत हाल होगी. The advantage of making this budget is that in advance we would know
that whether we will be requiring to borrow some amount of cash, or there will be no need to borrow, but we'll have surplus cash which we can plan to invest somewhere to make additional profits. Now let's see what are the sources of cash. Sources of cash से मुराद है कि कैश कहाँ कहाँ से आएगा, रिसीट्स कहाँ से होंगी. तो सबसे बड़ा सोर्स जो रेगुलर सोर्स है कैश का, दैट इज सेल्स और रेवेन्यू. यानी अगर हम कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो वो सेल है, और अगर हम कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो वो हमारा रेवेन्यू है. सो दिस रेवेन्यू और सेल, वेदर इट इज़ अ कैश सेल और इट इज़ अ क्रेडिट सेल, बट अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इनटू सोर्स ऑफ कैश. लोन्स और बोरोइंग्स और डेट्स, जब हम कोई लोन लेते हैं तो उस लोन लेने से हमारे पास कैश की इनफ्लो होती है, एंड दैट इज़ अ सोर्स ऑफ कैश. सेल ऑफ एसेट्स, कई दफ़ा हमारे पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, या जिनकी वैल्यू, जैसे कि लैंड है ख़ास तौर पे, जिसकी वैल्यू जब हमने ख़रीदा था तो बहुत कम थी, और आज हम अपनी बिजनेस में उस लैंड को सेल करके एक्सपेंशन कर सकते हैं. एंड इफ वी डिस्पोज ऑफ और इफ वी सेल दोज फिक्स्ड एसेट्स जनरली, then from those the sale of those assets we also get a cash inflow, and that is also one big source of cash. Contrast, opposite to that, is the application of cash. अब हमें इस कैश को कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज करना है, कहाँ कहाँ पर हमें इस कैश की ज़रूरत पड़ने वाली है, एंड दैट इज़ वेयर विल बी द कैश आउटफ्लोज. द फर्स्ट वन, अगेन हम एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से ले रहे हैं जहाँ पर हमारी नॉर्मल एक्टिविटी बाइंग और सेलिंग की चल रही है. सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश गोज फॉर परचेजेस, द गुड्स, द इन्वेंट्री दैट वी परचेज, वी हैव टू पे cash for that. So a major application of cash is in purchases. Then we have to incur expenses, either in the production, like factory expenses, labor, or the salaries, or the wages, or the utility expenses, the overheads, marketing expenses, advertising, sales, administration. All these expenses require cash. So a very large sum of cash actually goes for the payment of these expenses, and it is a huge application of cash. Then we have a repayment of loan. हमने कहा था कि हम cash inflow करते हैं by borrowing. So whenever a business borrows, there has to be a return of that amount. There has to be a repayment of that amount. And that repayment of a certain loan or a debt or the payment of a liability actually requires a cash outflow. So इसका मतलब ये है कि हमारे पास application of cash में purchases भी हैं, expenses भी हैं, और repayment of loan भी है. इसके अलावा हमारे पास एक और वो चीज़ है जिसे हम कहते हैं एक opportunity of making our cash more profitable, विच इज़ एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. यानी हमारे सामने एक ऐसी सूरत हाल आ गई कि अगर हमारे पास कैश हो तो हम इस कैश के ज़रिए और बहुत कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं. दिस इज़ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड अ स्पेक्युलेटिव पर्पस एज वी टॉक्ड अबाउट. सो कैश वुड ऑल्सो बी रिक्वायर फॉर investing purposes, and that is also an application of cash. So we conclude our discussion of this module by saying that cash is needed for various purposes, and considering all those purposes, we make a cash budget, and a cash budget is actually about our sources of cash and application of cash. Cash inflows कहाँ से आ रही हैं, कैश आउटफ्लो कहाँ पर जाएंगी, कहाँ पर हमारे पास कितना बैलेंस था कैश का शुरू में, आखिर में कितना रह गया. And this is what we do in routine regularly, so that we in advance in a very good position to make decisions about our future. So these applications and sources of cash actually lead to a result, whether we'll have more sources or more applications. And that means whether we'll have a surplus or we'll have a deficit.
यानी अगर हमारे पास ज़्यादा कैश इनफ्लो होगा, अगर हमारी सोर्सेज ज़्यादा होंगी, तो हमारे पास कैश सरप्लस होगा. If there is cash surplus, we can invest that cash somewhere and make additional profit. और अगर हमारे पास सोर्सेज यानी आउटफ्लोज जो है वो ज़्यादा होंगी और सोर्सेज कम होंगी यानी इनफ्लोज कम होंगी, तो उस केस में हमारे पास डिफिसिट आएगा, यानी हमारे पास एंटिसिपेटेड शॉर्टफॉल होगी कि एक महीने के बाद लेट्स से जनवरी के एंड पर हमारे पास लेट्स से 2 मिलियन रुपीस कैश की शॉर्टेज होगी. सो व्हाट वील डू इज that at the beginning of January, we'll start working on arranging that amount of cash from some bank or some other facility so that we can cover up that deficit. यानी ये deficit और ये surplus कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हमारी sources और application का difference है. अगर हमारे पास sources यानी inflows ज़्यादा हैं और एप्लीकेशंस यानी आउटफ्लोज कम है, तो हमारे पास सरप्लस कैश होगा जिसे हम इन्वेस्ट करेंगे. और अगर हमारे पास एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं और सोर्सेज कम हैं, यानी हमारी आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है, तो हमारे पास डिफिसिट होगा. और अगर डिफिसिट होगा तो इसका मतलब ये है कि हमें उस डिफिसिट को कवर करने के लिए इन एडवांस अरेंजमेंट करनी है ताकि हम टेक्निकल इंसॉल्वेंसी से बच सकें. हम इस मॉड्यूल को कंक्लूड करते हैं बाय सेइंग दैट कैश मैनेजमेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. कैश मैनेजमेंट के बगैर कोई भी बिजनेस इफेक्टिवली अच्छे तरीके से नहीं चल सकता, अपने प्रॉफिट्स को एनहांस नहीं कर सकता, and that means the business would not be competitive. So certainly in the end we would say that management of cash is as important as management of inventory, as important as management of receivable or any other part of working capital.